Hi, good morning, all of you. We are going to start our next video. Today, we are going to discuss a topic that is subscription. Subscription means acceptance of the shares. What it means? For example, a company want to issue its shares. Company want to issue its shares to the public. कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ accept ਕਰੂਗੀ so this concept subscription depend upon public acceptance subscription is of three types under subscription full and over what the three means in a simple language under subscription means the acceptance by the public is less than the invite by the share. What it means? For example, company invited the application for 20,000 shares. The application received from the public was 19,000. So this is known as under subscription. Means when the application received are less than the invite made by the company. So what is full subscription? Simply when acceptance is equals to the invite. Means जिन्ने शेयर कंपनी ने इनवाइट किए उन्ने शेयर दी एप्लीकेशन रिसीव हो गया फॉर एग्जांपल कि इनवाइटेड शेयर्स भी किन्ने सीगे 20,000 एंड एप्लीकेशन भी किन्नी रिसीव हुई हैं 20,000 What is third? Over subscription. Over subscription का मतलब की है when acceptance is more than invite. मतलब फॉर एग्जांपल इनवाइट कितने सीगे 20,000 एप्लीकेशन रिसीव कितने दिया हो गया 24,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब गा घट वाला आना फुल का मतलब कि जिन्हें बेचने आते सी उन्ने वाला कस्टमर आया ओवर मीन्स जिन्हें बेचने आते उस तो बाद का कस्टमर आया so these three are the concept of subscription in our share chapter this we are done because in each question we just write the X Limited issued 40,000 shares so that means कि जिन्ने इनवाइट किए उन्नी एप्लीकेशन आई है it's the simplest question so today we are going to start with the under subscription topic we are going to start with the topic under subscription let's take a question for example the question is X Limited invited the applications for 20,000 shares the application were received for
19,000 shares payable as 2 on application, 3 on allotment, 1 on first call, and balance on final call. How we calculate the balance? For example, the share is of rupees 10. This is written as balance. ठीक है, 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, टोटल कितने होने चाहिए 10, 10 ਵਿੱਚ 4 6 गए 4। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਵਾਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫਿਗਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਟ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੈ? The question is X Limited invited the application for 20,000 shares. The application was received for 19,000 shares. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 20,000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਆਇਆ 19,000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ 20,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਕਿ 19,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਸਰ 19,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? 19,000। ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 19,000। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? 19,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ? ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਗੀ? 19,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਰੁਪਏ 38,000। ठीक है, सेकेंड सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 38,000। थर्ड शेयर allotment account debit to share capital account 19,000 multiplied by 3, 9 3 है 57,000। इतना ही फोर्थ एंट्री, इतना ही फिफ्थ एंट्री, 6 7 8। समझ लगे कौन से? मतलब कि सर जी एंटर का क्वेश्चन होया ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ क्वेश्चन चेंज हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल सही। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। I am taking another question in which there would be security pre-reserve. Yes. Next question is X Limited invited the application for 20,000 shares. Application received for 19,000 shares. Same, but the change is that the 10 rupee share is issued at 12. Payable as 2 on application, 5 on allotment, 3 on first call, and 2 on final call. If here is balance, how would we calculate? किन्ने रुपए से सेल किया सर? 12 रुपए से किया। सो टोटल कितना बनना चाहिए? 12। 2 + 5 7, 7 and 10, 10 से 2 12। जैसे बैलेंस लिखा है 2 के में आना सीखा, पता लग गया ना? ओके, सो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन फेर हुई है कि 19,000 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। फर्स्ट एंट्री फेर उतना ही पास होगी। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 19,000 multiplied by 2, 38,000। Second, share application account debit to share capital account 38,000। 3, premium is on allotment. So how the entry would be passed? Share allotment account debit to share capital account to security premium reserve account. How the figures will be transferred? Check here now. Allotment is of rupees 5. Here the amount will be transferred as per rupees 5. Premium 2 rupees, 2 rupees in the premium. 5 rupees is debit
2 rupees is credit and credit require 3 rupees more. Balancing figure. मतलब कि 5 रुपये अलॉटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 2 रुपये ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗेगा ਸਰ 3 रुपये अमाउंट कितने लाओगी 19,000 ना मल्टीप्लाई करके सो ये कितना हो गया 95,000 ये हो गया थोड़ा 19 ना मल्टीप्लाई करके 57,000 और 19 ना मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 38,000 ठीक है सो फोर्थ एंट्री की होगी फोर्थ एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 95,000 फिफ्थ एंट्री होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 सेवन एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लास्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बस एक छोटा ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਸੋਲਵ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ and try to cover this concept. Thank you.